So tell me the answer to this. The study which proceeds from effect to cause. Effect से cause पे जा रही है. Right? So for example, smoking causing lung cancer. So it is going from patients of lung cancer and then you ask them history of smoking. So what are you starting with? You are starting with a case, right? You are starting with a case of lung cancer. So this is going to be not cohort but case control, right? And remember, where do you control the case? We control the case in ऑपरेटिंग रूम OR. सो केस कंट्रोल में क्या मिलता है? ऑड्स रेशियो मिलता है. ठीक है. रिलेटिव रिस्क हमें कहाँ मिलता है? रिलेटिव रिस्क मिलता है कोहॉर्ट में. केस कंट्रोल में हमें मिलता है ऑड्स रेशियो. ठीक है. सो केस कंट्रोल ऑड्स रेशियो. Next one, Herring-Brew reflex is mediated by. So what is this Herring reflex? So this is a reflex which is preventing the overinflation of the lung. So sending the inhibitory signals, right? So when the lung is inflating, the stretch receptors which are there, right? They will send the signal कि और inflation नहीं होना चाहिए, नहीं तो rupture हो जाएगा. So remember, this is inhibiting the further inflation of the lungs, the overinflation of lungs. That is what is Herring-Brew reflex. So what is this mediated by? This is mediated by slowly adapting myelinated vagal fibers. Okay, that is what mediates the Herring-Brew reflex. Okay, remember this is by vagus. Okay, and this is slowly adapting myelinated vagal fibers. नेक्स्ट वन, वारफेरिन इनहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग. आपको पता है कि जो वारफेरिन है वो विटामिन के का एंटागोनिस्ट है. तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट 2, 7, 9, 10 है ना. तो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं 2, 7, 9, 10. सो वारफेरिन भी उनको ही इनहिबिट करेगा. सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3, 2, 7, 9, 10. प्लस होता है प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, वो जिनका नॉर्मली एंटीकोएगुलेंट वाला फंक्शन है, वो भी विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. सो वारफेरिन इज विटामिन के एंटागोनिस्ट 2, 7, 9, 10. What do you monitor with warfarin? PT or APTT? What do you monitor with warfarin? Remember, with warfarin we monitor PT INR, right? With heparin it is APTT. The mnemonic for that, I hope you remember, happy and wet. With heparin it is APTT, with warfarin it is PT. Okay, so with heparin APTT, with warfarin PT. Next one, which of the following is characterized by Hürthl cells? Remember H for H. So this is Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto's thyroiditis basically has Hürthl cells. Remember H for H. Hashimoto's thyroiditis. Generally this has what antibodies positive? TPO, anti-TPO antibody positive, right? A common cause of hypothyroidism. What malignancy can develop here in Hashimoto's? It has a lot of lymphocytes. Remember, lymphoma can develop in Hashimoto's thyroiditis. Okay, lymphoma हो सकता है. ठीक है? Next one, which of the following will cause an increase in FRC? So the functional residual capacity is increasing. Why this residual is increasing? Because it is not able to go out. So why is it not able to go out? Because there is obstruction, right? So increase in FRC is an obstructive lung disease. Which of the following basically is obstructive lung disease? That is going to be emphysema. Okay. Pulmonary fibrosis is restrictive. Myasthenia gravis, muscle weakness, is also restrictive. Right? So remember, you have to search for obstructive lung disease, which is emphysema. COPD का component basically. Obstructive lung disease में most important हम क्या देखते हैं कि expiration effect होता है. There is decrease in FEV1 by FVC. Okay, there is decrease in FEV1 by FVC is what is seen in obstructive lung disease. In restrictive lung diseases, the lung is not able to expand. तो सब वॉल्यूम्स इसमें कम हो जाती है. TLC कम हो जाएगी, FRC कम हो जाएगी. ऑब्स्ट्रक्टिव में FRC बढ़ जाएगा. ठीक है. Next one, the pain in early labor is associated with what dermatomes? It is T10 to L1. Early is T10 to L1. Then in the late stage, that is when the pudendal nerve is coming in. That is when it is S2, S3, S4. But initial labor, that is going to be T10 to
L1. Okay, remember T10 to L1. So पहले ऊपर से start होगा फिर नीचे नीचे जाएगा. So remember it is T10 to L1 in early labor. Karyotype and partial mole is which of the following? Remember that partial mole is TRI. That means it's a triploid wala. 23 threes are 69 wala is what is a partial mole. 69XXY. So remember the partial mole hai, that is a triploid. Okay, that is going to be 69XXY. Is this clear with everyone? Right, so what appearance do you see in a complete mole on ultrasound? Complete mole में सिर्फ vesicular spaces दिखेगी. That gives the snowstorm appearance. Okay, snowstorm appearance is seen in a complete molar pregnancy. It has increase in the beta HCG levels, right? And remember, whenever you have a pregnant patient with hyperthyroidism ke features, you should always think of a molar pregnancy. Okay, you should always think of molar pregnancy. Correct, Yuvraj. What is the marker for granulosa cell tumor? I hope you remember story mnemonic है जो हमारी granny जिसकी age है 99 years. She is always very excited. She cannot be inhibited. Granny अपने ex को बुलाती है. Granny calls her ex for a cup of coffee and the ex gets roses for granny. So 99 is CD99. Inhibin is the tumor marker. X is the call exner bodies. कॉफी बीन न्यूक्लियाई सूडो रोजेट अपीयरेंस है ना, ये सब है ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर के लिए. तो इनहिबिटेड इट इज गोइंग टू बी इनहिबिन. पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक बोले तो इनहिबिन बी इज द मार्कर फॉर ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर. ओके, इज दिस क्लियर विथ एवरीवन? इफ आई आस्क यू ये जो ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर है, इज इट अ एपिथेलियल ट्यूमर? Is it a sex-cord stromal tumor or is it a germ cell tumor? What kind of tumor is this granulosa cell tumor? कौन सा टाइप का ट्यूमर है ये ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर? एपिथेलियम नहीं है, जर्म सेल भी नहीं है, उसमें फीटस वाला सब आता है. दिस इज अ सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर. ओके, दिस इज अ सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर. इट इज नॉट एपिथेलियल और जर्म सेल. ठीक है, क्लियर विथ एवरीवन? देखो, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, करेक्ट. नेक्स्ट वन, ओवरी डेवलप्स फ्रॉम. ओवरी डज नॉट डेवलप फ्रॉम मुलेरियन डक्ट. मुलेरियन डक्ट से आता है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और अपर वजाइना. ठीक है, ओवरी डज नॉट कम एंड दैट इज वाई जब मुलेरियन एजेनेसिस होता है, MRKH सिंड्रोम होता है, तो ओवरी उसमें नॉर्मल होती है, तो इसीलिए ईस्ट्रोजन बनता है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नॉर्मल होते हैं. ठीक है, सो मुलेरियन डक्ट से तो नहीं आता है. ओवरी कम्स फ्रॉम जेनाइटल रिज which is basically mesoderm. What mesoderm? Intermediate mesoderm which forms genitourinary system. Genital tubercle क्या बनाता है फीमेल में? Tubercle is like the clitoris. Okay, so clitoris comes from genital tubercle. Ridge forms the gonads. Okay, the ovary comes from the ridge. Next one, Mobius syndrome in fetus occurs due to maternal intake of मीजोप्रोस्टॉल, मिफिप्रिस्टोन नहीं, मीजोप्रोस्टॉल. मोबियस इज मीटिंग ऑफ आईबॉल्स. इसको आप याद कर सकते हो, मीटिंग ऑफ आईबॉल्स इज अनसफिशिएंट. ओके, सो द कन्वर्जेंस ऑफ द आई इज अफेक्टेड. So Mobius syndrome, remember, is seen with mesoprostol. Okay, it is seen with mesoprostol. Mobius syndrome is seen with mesoprostol. ठीक है, important. DES से क्या होता है? What teratogenic effect do you see if the mother takes DES, diethylstilbestrol? कौन सा दिखता है DES के साथ? Yes. Anyone? DES के साथ कौन सा teratogenic effect दिखता है? So remember, DES classically causes clear cell adenocarcinoma of vagina. Okay, the clear cell carcinoma of vagina. Very good, Dr. Ekta. So it causes a clear cell carcinoma of vagina in a female child.
Okay, correct.